Bangladesh. My grandfather, God bless his soul, who used to support us financially at that time, became financially a little more constrained because Bhutto came in and nationalized a lot of stuff. So we weren't as wealthy as we were supposed to be, or would have been. And I had a Levi, I went to Karachi Grammar School at that time, and I had a Levi's jacket with me. And what I did is, one of my friends wanted to buy it, so I went to my tailor, Darzi, and told him, ये jacket की copy बनाओ. तो वो master जी कहते हैं कि ये कपड़ा क्या है? What is this fabric? And I said, I don't know. Denim. This is not denim. This is denim. It's some other, the regular jeans denim, the new one. So what we did is we went to a tent manufacturer. We got some canvas. We dyed it in blue ink. And in Karachi, we opened up the first men's jeans store in 1971. In March 1971, we held the first catwalk in Pakistan's history. By 1983, we were the largest, I was the most talked about fashion designer. You might have heard Rizwan Beg, one of the designers. He was a kid who used to come to my boutique. He once told me, saying, I really got inspired by your designs to become a designer. Anyway, 83, in 79, I got married to my girlfriend, my wife, my gorgeous life partner, Farzana. And we had our first child in 79 and 80, in 1980, and Mizpah, and she passed away because of a recessive gene at the age of 6 months. And about 8 months later, my mother had some injury or went to a hospital, which now is a shopping center in Karachi, only place in the world where humanity would allow you to destroy a hospital so you can make a shopping mall and make more money. Wow, it's the only country. Wow, only place in human life that you think hospital के अलावा ये पैसे ज़्यादा बनेंगे तो shopping mall बनाओ. Middle East Hospital. My mother went there for an injury, and by midnight they had killed her. Another 9-10 months later, my father, who just could take much more of it, died. And then another, I think 6 months later, my third child was born, Ali. And the doctor said he's having the same problem that my first child, Misbah, died. And so we were doing very well, so I said, we'll take him to the US. And we took him to San Francisco. Unfortunately, he died there after 6 months. The day he died, I was in a car accident, and I was in a hospital. And so my start in America was very interesting. My wife walked up as I came out of coma. My wife was standing there and she says, we lost Ali. This is 1983 June. And that's how my life began in the United States. I then created the first company. I had $120,000 of bills to pay on my son. And there was no insurance product to cover that, so I created the first product in the US to insure people who come into the US. And I didn't know how to sell it. I had no idea. There was no internet to market it massively. And Silicon Valley was about to explode with people from India coming in and opening up companies, and their wives would not have a social security number, which is a number that you get a tax ID. And they wouldn't have that, and they could buy insurance. I built a product 5 years before that just to meet it. And the rest is history. We became the largest seller of visitors, medical insurance. We were household names. We did international benefits with some of the greatest companies that you will think of. And then we continuously kept inventing. So I'm basically an inventor, which you are, because you're working for startups. So, you're all startup gurus. A startup, you want to think about startups as visionary innovators. If anybody tells you, if anybody tells you it cannot be done, that's all the more reason you should do it. Can you tell me why? Why do you think it's all the more reason? I tell you, who needs it up, but I need it done. Or why would you want to make that? Yeah, it's not a thing that कोई startup if we start के इसके ऊपर
या कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट दिस तो अगर हम कोई भी इसके ऊपर फेलियर या अगर हम उसकी टर्म्स एंड कंडीशन बिफोर टू डू दिस कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाट विल स्टैंड देयर अगर वो हमें नहीं पता है प्रॉपर्ली और हम वर्क ऑफ इसके ऊपर कर रहे हैं देन startup is basically the lead to the failure and the success. Talk better आपने जो आपने छोड़ा That's where the biggest opportunity lies. Yes, but why should you not listen to everybody telling you? Because if you fail, if you don't do it, then what happens? If you can't do what everybody told you you couldn't do, don't answer it on the right, not the answer on the way. You didn't fail. You can never fail. If nobody else can do it, there's no detriment in it because you didn't fail. अगर मुझे कोई कहे कि ये बनाओ और ये यूं बनाओ, इसको यूं बनाओ, और मैं बनाने शुरू हो जाता हूँ, आपके तो नहीं बनेगा, आपके तो नहीं बनेगा, और 15 दिन के बाद मैं नहीं बना सकता, तो फेल तो होगा, किसी और ने नहीं बनाया. So there's no failure. So मेरा एक perspective है कि as an entrepreneur you're out there to disrupt, which means you're trying to do something that was never done before. So there is no precedence to not fail, right? You are creating your own blue ocean, and that blue ocean could be anywhere, any start from anywhere, go to anywhere. So if you are not able to finish it, people don't know what it's going to be looking like. So there is no failure. It's a journey. It's a journey. And so further down the line, we created other products. I created the first online insurance product in the world in 1997. Most of you weren't even born then. That's, when internet was just about taking off in 1997, we did. It was tough because most people told us there's no way anybody will buy insurance online. Or Drew Bolo with them, stuff like that. But we were successful. I constantly do things in innovation where nobody's done. One other thing we just did is we did endowed a chair on Imam Ali at Habib University. Nobody's ever done that. Nobody's taught religion as a subject. We've always taught religion as a religion. Islam is a religion. Why do we teach it as a subject? Totally out of the box. Nobody's done that. If you look at those subject matters and we look at Elon Musk sayings and Steve Jobs videos and we get motivated, why don't we look at the teachings of the Prophet, peace be upon him, Imam Ali, and if you look at that, the wisdom is just out of the world. Amazing knowledge we get. So Genius of the genius is Maula Ali. He's a genius of geniuses. Absolutely. The wisdom. So you were mentioning something, we were going there, and Zansa was asking, so what happens when there's a startup that believes in developing the product? Where do you get the money from? So, sir, kindly share that. So look, I come from Silicon Valley, where actually in the 60s when we went to America, so most people in Pakistan believed that if you go to America, एक दरख्त होगा उसके अंदर से पैसे गिरते हैं और लड़कियां खड़ी होंगी. But neither are true. But in Silicon Valley, by the way, the women there are just as decent and just as undecent as in Pakistan. They're no different. In fact, they're more untouchable than many other ones you'll see in other parts of the world. And I've not seen any woman anywhere in the world do anything differently. It's the men who think that they. आपसे दो दोस्तों को क्या लगे तो आप चढ़ जाते हैं. Right. So anyway, I think the other thing is money growing on trees. Silicon Valley में एक बड़ा joke चलता है. जो कि Sand Hill Road. Sand Hill Road is where all the startups came out of, right? Your Googles, your Facebooks, everything. Sand Hill Road is very famous in that audience. So joke here, okay, what happens is you go and sit under a tree. And you go and sit under a tree, the paisa गिरेगा. And what do you do with the money? You go to open up a startup. Then you take the startup, you make it $1 billion company. Then what do? You go and sit up on top of the tree. And you throw the money down. And that's the sad tragedy of this country. The people that make it don't sit on the top of the tree. They put it in real estate.
They put it in Swiss banks. They don't put it on top of the tree and drop it back, which is a sunnah. Circulate the money. Reinvest. Reinvest. They don't. People in Pakistan don't reinvest. You can only get funding from your mamu, khalu, chacha, or your bank manager who's your chacha. If your bank manager is not your chacha, it's going to be tough. And if you're not Zain Jamaat's son, you won't get money because you're not a rich man's son. There's a joke in America, they say the banks only loan money to people who don't need it. बाकी को डिवाइड करते हैं. That's true everywhere. Yeah, but it's in Pakistan, the challenge is for somebody that is not connected, but brilliantly smart. So Habib University, and I keep saying that because I love that institute. You know what they've done? They've split the admissions in two sections. One, all the A-levels, Cambridge people who speak English like I do and who go off and know about football and, because when you go to a university, Ivy school, you've got to answer all those questions and qualify, right? So, वो बेचारा जो मेट्रिक करके आया है, he's genius. वो पढ़ के अपने दरख्त के नीचे कैंडल के अंदर पढ़ के उसने मेट्रिक में टॉप किया पूरे. लेकिन वो इंग्लिश में बात ही नहीं कर सकता. अब आपके 3,000 एप्लीकेंट है और सिर्फ 300 आदमी उन्होंने सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका तो मौका ही नहीं आएगा. You won't get a chance. Habib University, 50% of the students come जिनको वो वाले उनको वो करते हैं. And the only university that does it on scholarships. 60% of the kids are 100% scholarship. That's what Pakistan needs to do. हमारे यहाँ क्या होता है? ये मेरे वाले साहब हैं. मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ के आया और फिर कहा कि इनकी कुर्सी पर बैठ के फैक्ट्री चला रहा हूँ. In America, what happens? बिल गेट्स का बेटा आएगा, पहले वो सीखेगा, कुर्सी पर आता है, इसने मौके पहले जाके सीख. Go to the clerk, learn the system, treat it fairly. So, unfortunately, I'm the generation that really, if all the girls will plug their ears, I'm the generation that screwed this country. I'm sorry for the use of language. Unfortunately, burden आपके पर पड़ा है, आप पर, all the young people here. It's your responsibility to fix this country. हम तो बिगाड़ के चले गए, अयाशी हमने कर ली, आपने ठीक करना है. आपको 2-3 जादू मैं देता हूँ ठीक करने के. पहले आप गिवर्स बने. गिवर बन जाए, देखिएगा मुल्क सही हो जाएगा. गिवर के क्या मतलब होता है? मैं इनको मिलूं, पहले दिन आप जानते हैं किसी पास, तो मेरी कॉलिंग कार्ड है, मैं सबको देता हूँ, आपको भी दूंगा ये कॉलिंग कार्ड खत्म होने से. What you do is you look at it and the first thing, अभी तो मुलाकात नहीं, काम आप कर सकते हो. क्या है कोई मुश्किल पड़ी है? Now I'll tell you another version. क्या है ये सब? यार मेरे बेटे को जॉब चाहिए ना देंगे. This is what I say all the time. That's me. आप यहाँ से लेके सैन फ्रांसिस्को तक किसी से पूछेगा, ज़ैन जिमिंजी ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा है. मेरी किताब में दिया क्या? Everything life today is appointed. मैं मांगता नहीं हूँ, मैं पहले what can I do for you? यहाँ के लेजेंड है लाहौर के, आप जानते हो कि सईद बाबर ने. कल मैं उनके और रज़ा दाऊद साहब के साथ लंच कर रहा था उनके घर पर. वो 93 years old है. 93 years old, legend of this country. और उनसे मैं 22 साल से उनके साथ लंच के लिए कुछ काम थोड़ा बहुत करता हूँ. And the guy never is always मुझे कोई चीज सोचता भी हूँ तो पहले गिफ्ट. मैं हमेशा कल भी बल्कि किया था, मैं परसों और मैं for lunch. I didn't take any gift to him, but guess what? When I was leaving, I got a gift from him. Become givers. Givers are the richest people. आप मुझसे कुछ मांगे, आप कुछ मांगे, मुझसे मांगे कुछ.
advice how to be successful. क्या केवल बजाय आपको इतनी बड़ी एटीट्यूड चेंज होगा। मेरी ये लाइन लिख लें दिल में या पेन से कोई लिख लें, रिकॉर्ड करें तो लिख लीजिएगा। दिस लाइन विल मेक यू मिलियंस। डोंट चेज द कप, चेज द फिनिश लाइन। ये सब स्टार्ट करें। डोंट चेज द कप, चेज द फिनिश लाइन। इसका मतलब क्या है? कोई ट्रांसलेट करेगा उर्दू में या इंग्लिश में? There are no shortcuts. Yes, excellence. That's another line of mine, I'll tell you, but that's not the one I'm talking about. Don't be hasty. Go through the process. Don't be hasty. And this is one of the lessons. So basically, don't look at exit. मुझे इतने बिलियन बनाने हैं, मैंने करोड़पति होना है, मैंने मर्सिडीज बेंज चलानी है। अब यार मैंने ये इख्तिताम बनाना है, मैंने ये काम खत्म करना है। मेरा 7 साल का नवासा है। When he was 4 years old, लेगो का सबने सुना होगा, लेगो ब्रिक्स। लेगो की एक मॉडल है उसकी, बुगाटी गाड़ी, उसके अंदर 4200 पार्ट्स हैं, ब्रिक्स, इंजीनियर्स, गियर, सिस्टम है पूरा। 4200। वो डब्बा इतना बड़ा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है +18 years recommended age, +18। वो 4 साल का था। उसको अगर आप अभी कॉल करें, उस बच्चे को अभी कॉल करें और उसको सिर्फ ये कहें once a job begun, सिर्फ ये कहेगा, वो कहेगा once a job begun, leave it not till it's done. No matter how big or small, you do it well or don't do it at all. वो इस तरह नहीं कहेगा, मैं क्या कर सकता हूं? Once a job begun, leave it not till it's done. No matter how big or small, you do it well or don't do it. इसका हमारे पास ऑपोजिट हम करते हैं। उसका एक ही वर्ड है जो हमारा है। वो हमारा वर्ड जो है ना, वो हमारी पढ़ाई भी है और वो ही चीज की वजह से हम जो मुल्क आज हैं, हम जो मुल्क आज हैं, वो उसी वजह से एक अल्फाज है। कोई कैसे करते हैं? एक वर्ड, जुगाड़। Shortcut. We are people, ये माइक्रोफोन विदाउट एनी बैटरी में चला सकता हूं। अगर कोई दुनिया में चला तो पार्सल कर लेगा। आपको पता है दुनिया में सबसे पहला वायरस किसने बनाया था? बड़ी खुशी से। सबसे बड़ी सिक्योरिटी की कंपनी भी पाकिस्तान ने अशर अजीज। द डिफरेंस इज, एक आदमी ने अपना वो लेके एंड जेल पे गया, वही आइडिया थी, उसने तो 20-25 साल पहले ही फिगर आउट किया था कैसे घुसना। अगर वो उस वक्त सिक्योरिटी कंपनी बना था, वो तो आज बिल गेट्स से बड़ा होता। It's जुगाड़। Once a job begun, leave it not till it's done. No matter how big or small, you do it well or don't do it at all. वो लेगो की बुगाटी उसने 6.5 महीने में खत्म की थी, बच्चे ने 4 साल की। मैं आपको तस्वीर जो भी मांगे मैं भेज दूंगा आपको। वो बैठा हुआ है और वो आपको बोलेगा, उसकी बुक्स जो है ना, उसकी मैनुअल्स जो बनाने की, वो 60 to 80 पेजेस की 3 तो बुक्स हैं उसकी। Set 1, Set 2, Set 3. Guess what he didn't read any one of them. Huh? He probably didn't read any one of He them. was opening the pages. अच्छा, pictures they come. He has to follow it. अच्छा. It's very complex. Okay. It's 4,200 parts. Layers. Yes, engine बनाना होता है, फिर उसके बाद आपने gear shifter बनाना होता है, it exactly moves, wheel बन change होते हैं, gear, और जो गाड़ी लेगो पीछे चलती है। Not only could he read it and understand as well. No, he would picture it. Pictures. You know, but he also read. तो मेरी एक लाइन और है, don't work for completion, work for excellence. अब ये वायरल होगी है, कोई ना कोई इंडियंस भी देखेंगे इसको। Indians work 8 hours and produce about 9 or 10. In Hyderabad, India, in Bangalore, in Chandigarh, in Mumbai. Pakistanis work 8 hours and put in 3 hours to 10 people on desk. Upwork. 10 आदमी हो गए, हम फुल टाइम दे लेंगे, हम कर रहे हैं 3-3 घंटे सब जगह लगा रहे हैं।
Inna bin amal binniyat. The outcome of everything you do in life is based on the intention. Inna bin amal binniyat. आपकी नियत ही खराब हो गई आपको मिलेगा. फिर वो गिविंग पर आगे जब आप पैसों को चेस नहीं करोगे तो फिर आप एक्सेलेंस पर जाओगे. अगर मैं ये पढ़ाऊंगा तो मैं कहूंगा इससे अच्छा लगेगा. एप्पल फोन हाथ उठाइए. एप्पल फोन किसके पास है? एप्पल फोन, आईफोन. How many people have seen an Apple phone box? कभी खोला है डब्बा? खुदा की कसम, I swear to God. उसमें वो तो तार है ना, वो भी आर्टिस्ट ने बन किया हुआ है. वरना वो क्या आईफोन को नाड़ा बांध के भेज देते हैं. मैंने कभी देखा वो एक ट्विस्टर होता है उसको 15 दिन में तक आप बुढ़ा आदमी मेरे जैसे खोलने की करते. उसको खोले. Excellence. It's got nothing to do with the phone. Excellence. Presentation. I had the pleasure of presenting medical benefits to Steve Jobs in, I think, 99 or maybe 98 or somewhere around there. No, 89 or 90, somewhere around there. 40 साल पहले. उसकी कंप्यूटर कंपनी थी नेक्स्ट आफ्टर he left Apple. पहली दफा. He was got fired from Apple, then he opened up Next Computers. मैं प्रेजेंटेशन में इंश्योरेंस बेच सकता हूँ. मैं इंश्योरेंस का प्रपोजल लेके अंदर गया. बैठा वो मैं वो खोलेगा, प्राइस देखेगा, मुझसे आगे करेगा. मैं बड़ा सब याद करके आया. अच्छा, I just moved from Pakistan. मुझे पता ही नहीं बंदा कौन है. स्टीव जॉब्स का मुझे पता ही नहीं. तो मेरे साथ जो बंदा था, वो was training me to take me with him. वो उधर गया. स्टीव ने उठाया, प्रपोजल देखो. This font, it should be a bigger font. I learned from there. ये बंदे को उसको अंदर देखिए प्राइस रिसीव पर भी ज़्यादा नहीं है. लुक एट कैसा होगा. एप्पल का जो बॉक्स है जब आप खोलते हैं उसके एयर टाइट के लिए he used to fight with his people कि ये एयर टाइट होना चाहिए जो खोले. उसने पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया ना. उसने कहा ये टेलीफोन के ऊपर कीबोर्ड क्यों होता है. उससे पहले हमारे पास जो सेल फोन था उसके ऊपर कीबोर्ड होता था. बट ये कीबोर्ड निकालना है, फोन करना है बगैर कीबोर्ड. उससे फुल स्क्रीन का बना के उसमें कीबोर्ड. आज कोई not everybody in the world uses that without the keyboard. आपको पता है हमारे ज़माने में बटन होते थे, वो बटन दबा देते हैं. इतने बड़े बड़े फोन होते थे. Innovation and excellence. तो जो भी चीज अगर आपको आपका बॉस, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपका मियाँ कोई काम देता है तो आपको यार ये तो मैंने किया, ये मिठाई तो बनाई, इसके ऊपर मैं ये थोड़ा सा गाजर मिलाओ, थोड़ा सा टमाटर मिलाओ, and then you see how your life changes. उससे एक बहुत बड़ी चीज होगी, आप जो है ना ज्यादा चाहिए. मैं अपने होटल रूम में ऊपर गया, वापस नीचे आया. एक चीज ये चाहिए था, ये मैच नहीं हो रहा मेरे से. I was running late. Yes, I will not do it. It wasn't matching my clothes. मैंने 2 शर्ट चेंज की, मैंने इसके साथ ज्यादा मैच होना चाहिए. Excellence. आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे फर्क पड़ेगा कि मैं किस तरह लगा. It's not to show you. It's to show me. You feel good when you complete your excellence. चौगाड़ निकाल दे. झूठ का मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन हम बोलते हैं. असल मुझे हम माशाल्लाह हमारे घर वाले में अच्छे ट्रेन करते हैं. मैं बताता हूँ ट्रेनिंग किस तरह की है. फोन आता है घर पर और ये फोन का जवाब देते हैं बच्चे लोग. अब्बू अयूब साहब का फोन है, आप घर पर हो. What? This is how we train our kids. तो मॉरल दिखे हमारा कैरेक्टर, क्योंकि बाप ट्रेन कर रहे हैं. अगर माँ ट्रेन करेंगी कभी नहीं करवाएंगे. We need to let our women control society here in America. That's the only solution to this country of our generation. क्वेश्चन वाज द एक्सेलेंस के लिए. और उठ जाएगी सुबह, क्योंकि 4-5 बजे जब आप उठेंगे ना तो रात को न्याय खाने कोई 2 बजे तक नहीं चला. What time do I get up anywhere in the world? 6. No matter where I am in the world. Jet lag होता ही नहीं मुझे.
I'm 68 years old. I work how many hours a day? 14. Minimum 14 hours a day. मुझे कल लास्ट वीक 3-4 महीने पहले मैं और मेरी बेगम लोग डिसाइड कर रहे थे, झगड़ा हो रहा था हमारा। मैंने कहा सारा दे देते हैं फिलॉसफी में, हमारे पास अल्लाह के दिया हुआ सब कुछ है, सब देना शुरू कर, जस्ट गिव इट ऑल अवे टू अल्लाह। अपने बच्चों को नहीं, गिव इट फिलॉसफी। और भी होता है ऑब्वियसली वी सेटल इन सम नंबर, मैंने कहा चलो थोड़ा सा रख लेंगे। बट मुझे तो कल नहीं परसों उम्रे पर somebody asked me, said, यार रिटायर क्यों नहीं होता? फिर मैंने इलॉन मस्क वाली बात बोली। इलॉन मस्क ने बड़ी अच्छी बात बोली है, उसकी वीडियो बड़ी अच्छी है, वो देखिएगा जरूर। He said, you know, I have a lot of friends in Silicon Valley who have retired and made millions in it. What did they do? What did you make money for? ऐसा किस चीज के लिए कर? और हम why इधर कोई क्रिश्चियन या हिंदू या जू बैठे हैं? सब मुसलमान, you're what? Christian. So you're unfortunate. The rest of them are very lucky because Muslims are guaranteed a roof and food as long as you work hard. The only ones in the book, which means you don't need to rob, you don't need to steal, you just need to work hard. Rozi Milegi, which makes this room even better because then you can start up investments. You can do startups. क्योंकि आपको तो रोजी guaranteed है, ये तो किसी ने नहीं दिया। अगर मैं तो हर वो कॉलेज ज्वाइन करूँ जो कि एग्जाम पास करना guaranteed है। You join the college that gives you guarantee that you get A grades. It's not gives you that. Christians don't get it. Christians don't even get the timing, you know. They're going to go Sunday one time. और बोलते हैं कहीं भी पढ़ने आना नमाज, कहीं भी पढ़ने। You got it so good. You have no clue how good you got it. जिस तरह मैं जब पहले अमेरिका जाते हैं ना, कोई भी जाता है अमेरिका, then Americans have no idea how good they've got it. हम जाते हैं यार ये तो बड़ा आसान है, ट्रैवल लाइसेंस है ना, तो just go to the counter ये भरता हूँ, मुझे ट्रैवल लाइसेंस मिल जाता है। अभी मैं मनी चेंज करने गया था, कितनी आधे घंटा लगा। मैंने अपने डॉलर देने थे, तो मैं डॉलर दे रहा था उसमें एक दो नोट जो है ना जरा क्रैक नोट क्रैक दे रहे डॉलर से। मैंने कहा भाई ये Crack नहीं थे, वो 3 notes से स्टैम्प किया गया कुछ नहीं। और स्टैम्प में कोई तकलीफ नहीं, कहते ये नहीं चेंज हो गया। तो मैंने उसको मेरा फोन निकाला, उसमें एक आर्टिकल आया हुआ है डॉन में जिसमें मैंने हबीब यूनिवर्सिटी को जो इंडाउ किए शेयर, मैंने कहा तो फिर वो जो पैसे मैंने इसलिए दिए वो भी जारी हो गए। उसको सर ले ले रूल चेंज कर दिया, उसे मुझे नहीं दिया। अब वो आर्टिकल में वर्ड पीडीएफ में बना के लाया, उसको क्या पता? I mean, just absurd. This country is amazing. Jugaad, run the Jugaad. We've got some of the best youth. आपकी पॉपुलेशन की स्टैट्स बताता हूँ। जीडीपी आपको पता है 5 मुल्क जो है मोस्ट पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड, which ones? India, China, US, Indonesia, Pakistan. 5 most populated countries. So population, GDP, everybody understands GDP, all start off, right? So you understand what GDP means, right? Your gross national product. तो ये इन्होंने कोट पहना हुआ है, मजीद पहले जूते पहने हुए, बाल भी एक दिन सर पर, तो ये सब GDP, बाल GDP के बाद, but हर चीज पे लगाएंगे, that produces GDP. हर आदमी को शर्ट चाहिए ना, हर आदमी को मोजे चाहिए, तो GDP आपका बढ़ेगा, जितनी पॉपुलेशन होगी। अगर आपकी पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया जैसी है, मेरे ख्याल में 26 मिलियन लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में, 29 मिलियन है, 26, 27 लाख ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। कराची में 23 मिलियन है, तो कराची का जीडीपी मैच होना चाहिए। सब खरीदते हैं ना, सब चुराते नहीं, आपने चुराए, लेकिन बाकी लोग तो नहीं चुराते हैं, वो खरीदते हैं, कसम खुदा की वो खरीदते हैं। अब ये नहीं आ रहा, राइट? तो जीडीपी बढ़ता है। तो ये 5 मुल्क की जीडीपी जो है इज 40% of the world's GDP. ये 5 मुल्क। Anybody here can guess what the GDP of Pakistan of that 40%, उसमें पाकिस्तान का कितना हिस्सा है? About 2%. Less than 5%. He's saying less, yeah, बड़े कंफ्यूज आदमी है। 1% से भी कम। He's absolutely right.
0.37%. Why? Then you have to think. क्यों? किसके घर में 12 नौकर से काम है? नो जीडीपी कुछ नहीं कर देगा। नौकर क्या करते हैं? ड्राइवर क्यों करते हैं आप लोग? Services. क्या करते हैं? नो प्रोडक्शन, वेस्ट इन इकोनॉमी। ड्राइवर रखे हुए कई दुनिया में चलते फिरते लोग ड्राइवर रखते हैं। बेचारे लंगड़े लूड़े नहीं है, चलते फिरते लोग ड्राइवर रखते हैं। छोड़ो उसको, छोड़ो उसको, वो जाके कालीन बनाएगा, रोजी तो कमाएगा, वो जीडीपी बढ़ेगी आपकी। ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड एलिवेटर में जाए, इतनी सी एलिवेटर जगह भी नहीं है, उसमें एक बंदा बैठे 5 स्टार पर जाता है। बड़े ड्यूटीज है। आप बैठेगी एक कुर्सी पर पूरे दिन ऊपर नीचे जाती है। मैं तो नहीं बैठूंगा। What are we doing to them? Lack of purpose है सर लोगों को ना मकसद नहीं पता। Slavery है सर, गुलामी है। इमाम बिलाल को हमने आजाद किया है और वो काले थे। आपको दिखाने के लिए मेरी तो शादी हुई थी, मेरी बेगम के खाना दिखा कि ये काला है। We're the most gracious people on planet Earth. Mentally handicapped, racist. Absolutely. We need to change. I'm not going to do it, man. It's up to you all. You need to teach your generations to do this. And you'll never get a keynote speaker to come and do it because you'll never invite him again. I'm the only one who'll say it. Because I'll say it on your face because you and love on this one. We're the most talented parents and great employees of Dunia में Pakistan is a smart कोई भी नहीं है। But sir हम लोग में इतना lack of focus क्यों? हम अय्याशों में पड़े हुए हैं। हम गिवर्स नहीं हैं। हम गिवर्स नहीं हैं। Want more than we. Once you start giving, आप ट्राई कीजिएगा। आप किसी से मिले उससे पहले और क्या है? मैं आपके लिए क्या करूँ? It helped me a lot. Helped me a lot. So they have confidence, he उसका level कुछ और होगा तो जिससे देखिए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। अय्यूब साहब आप क्या सूट पहना है यार, बड़ा अच्छा सूट पहना। अब नॉर्मली आप नहीं वो कहेंगे यार तेरे शर्ट भी अच्छे, जराना शर्ट पहना फिर भी कहेंगे अच्छे नहीं। That's human nature. तो आप किसी के पास जाएंगे, how can I help you? कल आप उसको कॉल करेंगे, how can I help you? मैं खुदा की कसम खाता हूँ, अल्लाह पाक की कसम, एक हफ्ता नहीं जाता मेरी जिंदगी में पूरे शीशे कि कोई आदमी मेरे पास आके मुझे साथ दे जाता है, मेरे दिल कर जाता है। मुझे कोई मुसीबत पड़ने वाली है, कोई ना कोई आके उससे पहले वो मुसीबत को हल देता है, फिर वो मुसीबत आती है। कोई वो नहीं मानते और It's your positive energy. The more positive energy you give out, that's the one you receive. absolutely. So if I come, so in a little bit now, right? So I come here and do the startup, I go, और कैसे you come, और ये देखेंगे आज शर्ट बेचिए, ना इनको शर्ट मिलेगी, ना मुझे जूता मिलेगा, एंड में हार जाएगा। अगर ये इस तरह है कि यार इनके जूते बड़े बढ़िया होते हैं, मैं अपने जूते देना चाहता हूँ, और मैं कोई यार इसका ये व्हाइट शर्ट सलावा पहना हुआ ये देता हूँ, एंड भी आएगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैंने इनको वेलकम किया ग्रुप में, व्हाट अ ब्यूटीफुल शर्ट, ये लिटरली उतार रहे थे, मैंने कहा नहीं मुझे, I just like it, I don't want it, I love this shirt, that's it, उतार रहे थे, शायद गाड़ी में एक और रखी हो, मैं आपको तो ऐसे ही शो कर रहा हूँ। But I was That's giving- my way of taking things from my dad as well. I don't care when he's got a nice coat on and he just takes it off the case. I mean, it's yours now. So I get the feeling. I do it with everybody, all humans. अगर मैं मेरी एक शेरवानी है बड़ी अच्छी है, वो मैंने दिल्ली से बनाई है, I design my own clothes, I still do, and वो किसी कोई भी मुझे कहता है पसंद आती है, मैं उसकी देख लेता हूँ, चेस लेता हूँ, फिर 6-8 महीने में बनवा के बेचता हूँ। I don't charge them anything, give it. If he likes the shirt, I'll give it. मैंने रॉबर्ट ग्राम है, I'll get a Robert Graham shirt,
They're not cheap shirts, they're about $600-700 each. Right? They're really good shirts, इसके आप बटन देखें, मैच होते हैं, इसके बटन अलग होगा, इसके नीचे फिनिश अलग होगी. It's really, ये कफ है ना, ये अलग, ये खुलता है तो अलग होता है. It's really detailed shirt. But everybody else is there. तेरे साथ की कम होती ही नहीं है. अगर मेरे जेब में $1000 नहीं है और आप मांगे तो मेरे $1000 कम हो सकते हैं? नहीं, है ही नहीं. मेरा एक जोक है, ये सुनिए, दिस रियली ट्रू. दिस इज द जोक इन माय लाइफ. कोई हमारे दरवाजे पर आते कहते हैं मुझे $1000 चाहिए. अब वो निकालते हैं, जेब से $1000 देते हैं. अल्लाह में क्या करते हैं? मैंने जहन को केले रखे थे, उससे किसी को दे दिए, मुझे और देने पड़ेंगे. जो आपके नसीब में है वो कोई नहीं दे सकता है. Nobody in this room can take this mic if it's meant for me. You know the question came in? Nobody can take my question. नसीब में है. Nobody can take it. अगर मैं देना भी चाहूँ तो there will be some force and I will not be able to give it to you. It just won't happen. वो नसीब में नहीं. You will not get that mic. You got to just believe in that. You got to faith कि आपकी जो नसीब में हो जाए. उसके लिए आप एक्सेलेंस से काम करो. अल्लाह में भी तो ऊपर देखिएगा ना यार, इसने काम इतना करना था, पैसे इतने मिले थे. काम ज्यादा ही करता है, थोड़ा पैसे बढ़ा देता हूँ उसके. इसका नसीब बढ़ा. वो क्या saying है? The harder I work, the luckier I get. The harder I work, the luckier I get. कभी आपने सुना है? The less I work, the luckier I get. No. झूठ बोलना बंद कर दें, ये बहुत मुश्किल है वैसे, बहुत मुश्किल है. और हमारे लिए, क्योंकि हमारे माशरे में इंट्रेंच्ड है. और वो क्यों है? क्योंकि हम शो बहुत मारते हैं. झूठ बोलना चाहिए, वरना आप मुझे कम समझेंगे. अगर आपको पता है मैं तो गरीब हूँ तो आप मुझे स्टेज पर भी नहीं बुलाएंगे. But an ED would not have died the way he died. He would be the hero of the heroes. हर बिल्डिंग को उसकी तस्वीर लगी होती. वो गरीब था. उस बंदे से पूछो जिसकी माँ को एम्बुलेंस से लेके जाकर उसको बचाई थी लाइफ उसने, किस बच्चे की बचाई थी, उससे पूछो वो उसको क्या समझता है. कराची के अंदर रिपोर्ट हो रही है, कराची के अंदर बहुत एक्सट्रीम असोसिएशन हो रही है और बुरे हालात. कोई भी शख्स वहां पे बॉडीज को नहीं उठा रहा. आप कितने करोड़ लोगों को देखें, बॉडीज पड़ी हुई. बहुत अच्छे से लोग पाकिस्तान में बड़े में अच्छे. Sir, I have a life-size portrait of EB sir in my office. जिससे मेरा ऑफिस देखा है वो बहुत से भी बता सकते. बताइए किससे मेरा ऑफिस देखा हुआ? Am I right or am I right? He's my hero. उनके सवाल के अंदर थोड़ा ऐड करना प्लीज आपकी जिक्र. इतने सारे माशाल्लाह लोग थे, कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कोई नहीं जानता था. मैं कभी मिला भी नहीं. But this is one person portrait that I have. What is the money? We've got so many examples in Asia. We मैं have so थोड़ी many. यहाँ पे ध्यान की बात करें. मुझे आपको कुछ दिन पहले बताया, I remember कि कराची की इमरजेंसीज के अंदर डेथ रेशो कम हो गया है. ये आपको मुझे verbally बताया तो मुझे नॉलेज में आया. बिकॉज़ बहुत सारे लोगों ने फंडिंग की है जिनका कुछ नहीं पता वो कौन लोग और उस इमरजेंसीज को वो लोग चला रहे हैं. मतलब कहीं न्यूज़ में नहीं आया, कहीं मीडिया ने verbally कुछ ऐसे पहले बताया था, मुझे ध्यान में बैठ गई बात. इसके अननोन बहुत सारे लोगों के साथ तो बहुत अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में. बट अभी बाकी में यूथ में आप जीडीपी की मैं बात कर रहा था. एक तो आपके वो हो गए, बाकी आपके नौकर हो गए. हर घर में 2-3 नौकर. किसके लिए? सर लोग रेजिडेंट्स फैमिली मेंबर कम होते हैं और सर्वेंट्स ज्यादा होते हैं. माय वाइफ इज गिल्टी ऑफ दैट. आई एम सॉरी. मैं कराची कर जाता हूँ, मैं आपकी खाला क्या रहता हूँ, they treat this service very well. Yeah. But they're still servants. आप सोचिए कि एक इंसान पूरे साल में 1 महीने के लिए छुट्टी जाता है अपने गाँव. I'm 68 years old. If I did that 68 months में
अपनी पूरी जिंदगी में अपने खानदान की जरूरत ना हो। वाह, इससे बड़ी सजा को क्यों दे रहे हो मुझे? और फिर ये तो सब कुछ है, इंक्लूडिंग माय सेल्फ, कि अगर इफ्तारी हो रही रमजान और इफ्तारी हो रही पूरे दिन खाना उसने बनाया, जब इफ्तारी होगी आप टेबल पर बेइज्जत सब बैठे हैं, मैं चैलेंज करता हूँ बेटे, अम्मा हम लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी आप बैठो तो हम रोजा खोले। और आपके मेहमान भी आए, वो भी जो अमेरिका से आए हैं, वो भी बैठे हुए हैं और एक फॉरेनर भी बैठा हुआ है, और आपके अम्मा आ जाओ, वो खाना हमने इफ्तारी खोल दी। कोई कैसे? नो, ही कांट सिट विद यू, इज नॉट द सेम। अमेरिका में मेड आई, वो खाएगी आपके डाइनिंग टेबल पर, नीचे पे बैठ के खाएगी, वही टेबल पर खाएगी, उसी कार्टून से, उसी प्लेट में जिसमें आप खाते हैं। It's a fundamentals we need to change in within ourselves. हम क्या कर रहे हैं? Ethically बहुत गलत चीजें हैं, जैसे कि this thing always pinched me when I was growing up, कि ये नाइंसाफी जो माशरे में, जो हमने ना चाहते हुए भी सिखा देते हैं बच्चों को, ये नहीं होनी चाहिए, this is very wrong। और इसी तरह यहाँ पर डिवीजन बहुत है लोगों के दरमियान, वो है, खुशी है, मैं सुनी हूँ, मैं अच्छा मैं शिया हूँ। अजीब सी बात है सर, मतलब मैं शिया हूँ। मतलब सर मैं आपको बताती हूँ कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त सर्कल, मैं कभी पूछती भी नहीं हूँ क्या क्या है, और मेरा मतलब इवन इफ आई एम सही तो, लेकिन मैं कभी बताती भी नहीं, बिकॉज़ दीस थिंग्स डजंट मैटर। ठीक है, आपका अल्लाह से कनेक्शन होना चाहिए, देन आउटपुट यू आर मॉरली एथिकली आप कितने अच्छे इंसान हैं, और एक लाख के आपके बुनियाद के ऊपर और तकवा की बुनियाद के ऊपर एंड सर आपने बात की एक्सीलेंस की, जिस पर आपने जोर दिया, आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन। स्टार्टअप स्टेज के ऊपर मैंने अभी सियालकोट में भी और बाहर बहुत जगहों पर चीजें देखी, आई वांट टू अचीव दैट सॉर्ट ऑफ एन एक्सीलेंस, बट एक्सीलेंस इज अ प्रोसेस, यू नो। तो there are few people in Silicon Valley, मैं कुछ लोगों के पॉडकास्ट पे सुनती रहती हूँ, they always say excellence is an enemy of good, enemy of good। तो वो कहते हैं कि क्या आप इनोवेट करना शुरू होते हैं स्टेप बाय स्टेप, एंड फिर आप उस प्रोसेस से जब तक गुजरते नहीं तो आप जो है ना वो एक्सीलेंस अचीव नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हमारी एक प्रोडक्ट है टूल्स जो बनाती है, we have to get it right, everything, each and every control, हर electronics, हर चीज खूबसूरत से खूबसूरत तरीके और अच्छे से अच्छे तरीके से, have to make sure everything is working fine। काम कर रहे होते तो सर वो जो प्रोसेस होता है सिलिकॉन वैली में जो है ना होता ये कि जब आप उधार लेते हैं, फंडिंग लेते हैं, तो वीसीज जो है वेंचर कैपिटलिस्ट वो क्या कहते हैं, बिल्कुल पैसे लगाए, वो चाह रहे हैं कि आपको 100 रुपए लिए उसके लाख रुपए, लाख से 100 टाइम्स एक्सचेंज। अब वो होता है कि 15 कंपनी में लगाते हैं, उसमें से एक होती है उनके हाथ के वैसे कि वो थोड़े से बनते होंगे और लूज मोशन, तो वो तो आपको कहेंगे यार एक्सेल छोड़ो, पहले खत्म तो करो प्रोडक्ट। लेकिन मैं आपको अपनी बात कर, you should be working, you do things with excellence। सर मैं आपसे कोई मेरा क्वेश्चन है कि सर वो जो सेटिस्फैक्शन है ना वो फीलिंग नहीं आती when you are doing this all the things में मेरे साथ ये बड़ा प्रॉब्लम रहा है, मैं बहुत जल्दी जो चीजें जब सर प्रोसेस में डाल देती हूँ, I want to make it best drawn in the world, but there's also a cutoff कि excellence के ऊपर आप ला रहे हैं, लेकिन you're not delaying your product itself। आप इतनी फ्रीकी कि उसको वो खत्म भी नहीं कर पा रहे, you still have to go to completion। Excellence in completion। हाँ। There is a thing in startup ecosystem called fail fast। Make it, however, and fail and learn from it and get up again. Get up. Yes. You can't Relearn. So when you're doing something, you do it for excellence, but don't delay it। Time is so critical। Time is very critical। तो अगर आपको आज जुमे को शादी में जाना है, आप आज ही जाऊंगी, मैं ये सैटरडे मॉर्निंग डिलीवर कर दूंगा। मुझे किसी ने 2-3 साल पहले यहाँ किसी इवेंट पे किसी ने पूछा था, हाउ डू वी बिकम लाइक सिलिकॉन वैली। मैं शर्मिंदा होकर नीचे देखा, बोला क्या बनना है, तो आई टोल्ड देम वन थिंग कि
Tom was going into Apple Computers, and when he walked in at Sunday Sunday working because he had a presentation on Monday. And it was about 8 o'clock on Sunday. मैंने कहा आप में से कौन सा शेड कभी 10 बजे से पहले काम पर पहुंचता है? फिर आप बिस्किट निकालते हो, उसको चाय में डुबोते हो, एक सिप लेते हो, फिर मुंशी को बुलाते हो, हमें बताओ हिसाब किताब क्या है? You get to 10 o'clock, आपको जादू दे दिए गया फजर. As soon as the sun rises, get to work. You are ahead of everybody else. Everybody else. Actually, I just want to say something here. ऐसा नहीं कि जैन भाई अमेरिका से आए और बहुत शदीद कामयाब हैं, उनकी ये प्रैक्टिस है. I get up every day at 4:30 और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर टेस्ट करना है मुझे उसे मैसेज करके भेजिए, मैं आपको जवाब दूंगा. I know, but just you better mentor it. Justice, equality, integrity are our values. What set you and me apart are our deeds and nothing else. Wow. You have to set your mantra, read it again and again, make a tall statement, even if you don't believe it, but you want to get there. Inscribe it somewhere, and you will start believing and start acting as well. Integrity. What you promise is what you deliver. What is it? ये आज इधर आना था, कल रात को मुझे पता चला कि मेरी बेटी के ससुर की डेथ हो गई लाहौर में, और बेटा मेरा सन लॉ आ रहा है, वो परसों तक की कोशिश करता है. Now I'm going to go back to Lahore. I was going to fly home. अब मेरे पास टाइम शॉर्ट हो गया, so I had a choice. I could take the 4 o'clock bus or keep my word here. This is my word here. Now I take a car in the night, stay awake all night, get there. That is integrity. Promise here, deliver. इनको कॉल करता, I'm sorry साहब मेरे you know We would buy that. I mean, what can we say? no, but it's real. That's it was with the fana मैंने मैं तो नहीं दफा हूँ, बेटे ही दफा है क्यों मैंने साला है वो आता है I got there उसको चाहिए. I mean there's nobody there, single man, बेचारे उसकी लाश भी पड़ी हुई है, उसको करना है. I could have made an excuse. And you would have said, I'm so sorry, but आप कहते हैं अल्लाह, अब हम सोच भी करते 4 आदमी महफिल में कहते हैं बेचारा जन गई होगी. No, but why? मैंने हम एम्प्लॉय करते हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, यहाँ से एक इस्लामाबाद में एक बंदा था हमारा एम्प्लॉय, वो मेरे बेटे ने कहा कि डैड इट्स वेरी फनी. मैंने कहा क्या was funny? बोलते हैं he's taking a week off. मैंने कहा yeah, his mother died. Yeah, dad, but when he joined us about 4 years ago, his mother died then. भूल गया कि उसे पहले भी छुट्टी माँ के मरने की मिली है. अब मैं भी पॉसिबल उसके मियाँ की 4 बीवियाँ हों तो that's a different story. अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, वैन भाई ने जाना है, जाहिर है, he wants to go back as well to Lahore. आपके questions हैं जो आपको कर रहे हैं, please करें. Start questions. Start. And give me tough ones. जी सर. आपका नाम? Introduce करिए. डॉक्टर जावेद साहब जी. या नहीं चलेगा. मेरा सवाल छोटा सा ये, शुरू में पूछा था कि जब आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको फंड करना है. वो किस तरह से? फंडिंग देखिए, फंडिंग इज बेसिकली उधार. आई थिंक मैं 8 या 9 साल का था जब मैंने कॉमिक्स में बेचता था. कॉमिक दोस्तों को बेच के 4 आने की बेचता था और 30 पैसे से नहीं और 20 पैसे में वापस मिलता था. 25 सेंट्स में बेचता था और 5 पैसे. मेरी 8-9 साल की उम्र. तो मैं अपने अबू के पास गया, मैंने कहा यार मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है बिजनेस, तो मुझे 10-12 सुपरमैन की और आर्ची की 10-10 कॉमिक्स खरीदे. मैं और करूँगा बढ़ाऊंगा. दैट्स बेसिकली फंडिंग इज. अब मेरे बाप को बहुत तो दे देगा, लेकिन मैं किसी ऐरे खैर के पास जाता तो वो कहता अच्छा इसमें मेरा क्या बनाएंगे. फंडिंग इसकी तरह होती है. तो मैं अगर आपकी स्टार्टअप की कोई idea, मैं आपको फंड करूँ. You charge me, but it's got to be valued, right? मैं तो मेरे पैसे जाएंगे तो मैं देखूंगा भाई ये इनकी टीम क्या है. और एक चचा बैठा है, मामू बैठा है, ये करेंगे. मैं देखूँ प्रोडक्ट क्या है. इसकी कोई मार्केट ही नहीं है. सारी पूरी दुनिया में मार्केट इसकी 100,000 की है. आप कहेंगे मैं ये चीज बनाऊँ, इसकी मार्केट इतनी बड़ी है. यार ये तो बड़ी अच्छी आइडिया है, इसका भी यूज करो. तो इट डिपेंड्स. फंडिंग इस तरह होती है. बहुत ईजी है फंडिंग लेना, लेकिन आप
फंडिंग लेने से पहले आपको स्टेज तक ले आए हैं उसको कि थोड़ी रेवेन्यू, क्योंकि अगर आपकी कोई रेवेन्यू इस वक्त नहीं है और मैं फंड करता हूँ और let's say मैं $1 million डालता हूँ या 200,000 या 100,000 डालता हूँ, 90% मैं ले लूंगा कंपनी, आपको 2% में 98% मैं ले लूंगा, 2% आपको पैसा मिलेगी। जब एग्जिट करेंगे आप 100 मिलियन पर, आपको 2 मिलियन मिलेंगे, मुझे 98 मिलियन मिलेंगे, तो फायदा क्या होगा? तो नुकसान हो गया। अच्छा, दूसरी याद रखिएगा, जब हम फंडिंग लेते हैं पहले आप देख लें कि प्रोडक्ट क्या है, डिजाइन क्या है, एक पार्टनर जरूर लेंगे, एक होना चाहिए। अगर आप देखें गूगल को देखें, माइक्रोसॉफ्ट देखें, एप्पल देखें, एक ब्रेन था और एक मेरे तरह से बोले वो वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा हूँ, एक बनाने वाला और एक बेचने वाला। एक बनाने वाला एक बेचने वाला, बस। बिल गेट्स जाके उसने लिनक्स के वो देखी, सॉरी स्टीव जॉब्स ने लिनक्स मशीन को फिशेस जाके स्टीव वॉजनियाक को कहा ये बना। पॉल एलन, लेकिन इसको जानते नहीं उसको, बिल गेट्स का पार्टनर पॉल एलन जो मर गया अभी, कोई नहीं जानता। ही वाज बिगर देन बिल गेट्स इन मेनी वेज। स्टीव वॉजनियाक को कोई नहीं जानता, स्टीव जॉब्स को सब जानते हैं। तो फंडिंग हो जाएगी, आप मुझे भेजिएगा, गो कीप गोइंग, यू गो टू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सबको बोलें जो उस इंडस्ट्री में देखिए कौन इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत से फंड जाम है। एनी अदर क्वेश्चंस? रैप अप करें? यू वांट रैप अप? या आप जब स्टार्टअप कर रहे हैं, so every day you face a roadblock, failure hit करेंगे, challenge hit करेंगे. So how to pick yourself up again? What's your secret? What keeps you going after the failures? Yeah, so पहले तो आपकी फितरत वो होनी चाहिए कि you should be an entrepreneur. Entrepreneurs just don't look at failures; they're just lessons. I never look at a failure. I always think of a lesson. ये नहीं चल रहा, ठीक है, इसको तो करते हैं, चलाते हैं इसको, ये चलेगा, कैसे नहीं चलेगा? You must have the belief in yourself. You're either built like that or you're not. Right? So that's the first thing. And how do you bring yourself up? You know, I do one thing that brings me up every day. When I get up in the morning after I've done my namaz, I sit down with a prayer and I do this. I need to बैठ के मैं सोचता हूँ कि लास्ट 24 घंटों में how many people gave me love, time or money? अब आप सोचिए, मैं also early in the morning मैं सोचूं यार कल मैं यहाँ गया था, इन सारे लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी, कितनी देर बैठा, I'm lucky. वो यार वो बेचारा वो दुकानदार ने 2 रुपए मेरे दे दिए, उससे कहा आपको खले नहीं, आप ले ऐसे। What's my feeling that time? I'm up there. Start of the day, I'm a lucky man. बशर्ते मैं सुबह उठ यार कल बॉर्डर भी नहीं मिला, यार पप्पू की अम्मी भी लड़ रही है मुझसे, I'm always unlucky. It's the same person. It's what you look at and what you expect. If you're a giver, you'll always think about people doing for you. If you're a taker, then you're looking at what I didn't get, he got it. But I'm depressed, you know, 24 घंटे. Other questions? Yeah. I advise startups, commercialization and all that aspects. My question is more towards the mindset, and that question is: a dukandar is an entrepreneur himself, and we call ourselves as startup entrepreneurs as well. दोनों के बीच में mindset का बहुत बड़ा difference है. क्या उस चीज को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं ताकि स्टार्टअप्स एक तरीके से कमर्शियलाइजेशन वाले एस्पेक्ट को थोड़ा सा बेहतर समझ सकें? यानी वैल्यूएशन वैल्यू किसी स्टार्टअप की, तो हम ये कह सकते हैं हमारा माइंडसेट इज गोइंग टू स्केल इन अ बिग वे, जबकि एक दुकान के काम दोनों बोल कर रहे हैं, लेकिन स्केलिंग का जो है, ग्रोथ हैकिंग का जो एलिमेंट है, इनोवेशन का एलिमेंट वाली, how do we quantify that, break that mindset? So that's intellectual property, right? It basically is कि आप क्यों उसको देखिए, Yahoo was the first search engine, not Google. Yahoo was the first search engine, लेकिन Google ने उसको सोचा कि इस तरह बनेगा,
how will we do it differently? Now you got ChatGPT, right? How many people know about ChatGPT? Which apps? Everybody knows about chat. Everybody knows, right? Did Google, when it opened, after 9 months, everybody knew, ये कितने हो? 6 महीने हुए ना ChatGPT, 6-7 महीने, September, November, December, इतने जगह सारी दुनिया में बस पाकिस्तान में पता है। Google में all the way till 2000, YouTube के बाद बहुत कम हो जाता है। So I think to answer your question, and it's a very good question, by the way, very good question. How do you quantify a commercial, traditional motor business, mom and pop grocery store versus you're going to scale it to a very large end? You need to be convinced, first of all. Your figures and numbers will convince them. And how are you going to scale it up? And then you bring it to somebody, and an intelligent person will look at it and say, yeah, of course. वो तो कोई दुकान बनाएगा, आप नहीं बना दोगे। मेरा ज़्यादा point of view था कि वो बंदा जो स्टार्टअप के अंदर बैठा हुआ है, उसका mindset change किस तरीके से होगा कि वो commercialization को चीज़ नहीं है, उसका mindset हो गया नहीं होगा। इनके startups जो हैं वो ज़्यादातर अपने आप को scale up करना चाहते हैं, वो glorified terms use करते हैं, but कारोबार is कारोबार, business is a business, so you need to make it profitable to survive. Yeah. For any startup, when you have funding coming in, the business is going to survive on its own. पैसे फेंकते जाओ, किसी का पैसा लग रहा है उसके अंदर, वो चलता रहेगा. Until or unless business starts making money and starts standing on its own feet. वो वाला जो mindset है, वो achieve करना. वो mindset नहीं करा सकते ना, you get a marketing guy. आप बड़े ही सकते. वो जो engineer जो आपको वो बनाता है, वो आप उसको कहेंगे ये can this turn? Engineer कहेंगे नहीं. आगे वाला क्या of course it can turn. So you can't get an analytical brain to really do that any different. I don't think you can change the mindset of it. So तभी कह रहे हैं कि partnership थोड़ी चाहिए. एक product बनाना है और एक marketing करना है. Marketing में जाके इधर उधर बोल के वो vision बनाएगा. And you must have a marketing guy early. Must be in your team early. जो उसको बेच सके. तो जैसे सवाल इस तरह है जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, मैं ये मेरे साथ काम कर रहा हूँ, मैंने कुछ प्रोडक्ट ये मेरे साथ देख रहे हैं, साथ ट्रेन भी हो रहे हैं, ठीक है। 5 साल बाद ये कह रही मैं तो लगा हुआ हूँ, मैंने और कल ये वही काम वो शुरू कर दें, इसको किस तरह हम को नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। आप मेरे साथ काम शुरू करें भाई, यार ये तो बड़ा स्लो, मैं खुद कर लेता हूँ, कैसे रोकेंगे? You can't. You can go to court. There are systems there. You can make contracts, NDA sign. It's a very long process. आपके पास भी इतने पैसे होने चाहिए कि कोर्ट में आप मुझे लड़े, आपकी जो है इसको। और अगर तो मैं बड़ी अच्छी चीज कहता हूँ, again giver, मैं कहता हूँ if somebody takes my idea and makes it a $1 billion company और मैंने नहीं की, more power to him. मैं कहता हूँ अगर मैं वाकई में कुछ फर्क, मैं फर्क करिए माइक्रोफोन बना रहा था ना कि यूं चले, अगर इन्होंने उठा के बना लिया तो मुझे तो खुश होना चाहिए, मुझे काम भी नहीं करना पड़ा, मैंने पैसे भी हुए, किसी और बना दिया, मेरा बिल्कुल पूरा हो गया। I should be happy, I'm forgiven. मैं इस तरह सोचता हूँ, but that's not the business way to think of it. Business way you can put some shields and protections. But why would he leave? वो leave तभी करेगा ना कि या दो पार्टनर होते हैं ना, एक या फर्ज करें या तो पैसे बनेंगे या पैसे नहीं बनेंगे, पैसे नहीं बने तो मैं कहूँ यार मैंने पैसे लगाए ऐसे काम ही नहीं किया, वो कहेगा यार मैंने काम इतना किया इनके पता नहीं पैसे पूरे नहीं लगाए। अगर पैसे बन गए ये कहेंगे यार मैंने सारा काम किया, इन्होंने पैसे बनाए, ये मैं खुद ही लगा दिया, और मैं कहूँगा यार मैंने इतना पैसा लगाया ये सारे बना के आते हैं, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। Any other questions? Anybody wants, or shall we call it a day? Yeah. So you expressed the desire to set up a fund which is very, very important for startups to actually take off. Startups, they come here with ideas, with a good team, with preferably an MVP as well. But for them to take off, they need funding. So good thing is this, we are going to give them great deal of support, more than any other NICAT National Incubation Center.
again, because I'm from the same background, entrepreneurial background, so we will have good, strong support system that will ensure better chances of succeeding in that time period. If not, we pivot. If not, we pivot again. We redefine, we reinvent. We will not leave them alone. So I'll give it to you that I'll be happy to start a fund to fund companies that are here that, for small seed money to get anyway. As long as. Why you come here, please? Come here. Please come. So this young man is leading a company that is making a box, diagnostic box, that is going to going to make diagnostics for the doctor remotely in access to those vitals in real time. GR. So it's a intelligent device, like an Alexa, right? But you can sit at your home, tabletop, make your profile, has about 10 or 11 different diagnostics, including blood and all that. And I've combined that with telemedicine for my life. I cannot figure out why people are not doing it. There must be somebody doing it. That's why I don't sleep, because it wakes me up every No, night. no, but have you looked around? Yeah. Who's closest to that? There is one company here, but it has That- maybe that- 10 different devices. If there's one company here, there's probably not 100 companies. Yeah, but I'm So meeting you haven't somebody. done your homework, so what you have to do is first figure out who's doing anything close enough. Then see it. Your phone is doing something closer. Yeah. It gives you some of the vitals. Yeah, but Like they're not the- actionable. But They are breaking is No, they're like not. They're not accessible. Data also available. Action. Action. your physician But will not I- take these and actually take a ticket. Your phone takes an ECG, right? But number one, nobody is giving it when you talk it in real time. Number No, two, mine connects with my physician. My iPhone does, and he monitors if something goes wrong. but when you monitor that something goes wrong, you still have to go in to get a proper ECG done. I don't know. I can guarantee it Sure, 100%. Okay. So in your case, how would you force me to go? But you don't have to. You're giving a proper ECG in that one device in real time and Is it on the phone or is it a separate device? no, the device is separate. It's like an Alexa. Please face. Who's gonna carry the device? Tomorrow's world, you should have a device this big, it just gets here or something. Eventually. I see a gap here Yeah. because the doctor is sitting remotely and the patient is sitting at home. Who's going to take this device at their home? So you need to have a technician. Or have the device. And here in the phone. In the There phone. is, yeah. The app is there, the real-time diagnostics is there, and it's connected to the network. App is only going to transmit the data Transmit it in real has. time. So right now. the But this design- device has to be there. Yeah, the How will device- we get the device to their house, to their place? Well, essentially, you have a market. We don't talk with, we don't start C first, but we start BDP or something like that. ठीक है. And then eventually, and this device is also, the design is also. B2B का मतलब है कोई फार्मेसी में गया, उसने ये डाला है, उसी वक्त वो और चला गया देखा. mobile app or whatever app or forward locations देहातों में कहीं पे भी. Have you talked to Tyson? We haven't spoken to you guys. लेकिन अभी they are going to make it work 100%. We have spoken with Indus. We are about to sign. अभी percentage success rate क्या है आपका जो diagnosis का? The diagnosis we completed our sprint 1 and we did sprint 2. Sprint 1 के अंदर we have integrated about 4 different diagnostics. Sprint 2 के अंदर we will be integrating 4 more and we have about 2 months to do that. Give them a demo plus gas and labs and then. मैं आपको virtually demo दिलवाऊंगा. आपको virtually अगर आप याद नहीं है. So look, I'd be happy to look at it. I'll get you somebody who knows about medical devices. Okay. I don't. Okay. I do more stuff in the marketing space Okay. and other stuff. Medical devices is very complex. Yeah, and And you have it's got a lot of Definitely. liability. like third party liability and दूसरा you cannot mess with any of these labs. So you have 120,000% sure that it is working. Yeah, but I'd be surprised if there's not something out there that's similar. Well, there are devices out there. And people are. Have you done a patent search? We haven't done that. Oh, no, we did do a patent search, actually. We did do a patent search. And did you find something? Mark Zuckerberg, who hate. Different devices. Huh? There's no single device doing all of this. We've done a patent. एक नहीं है, कोई 3-4 करने के 2-3 करने के 5 मेरे को करने एक suitcase, एक
A comprehensive device. They're no comprehensive device, but they are. ये 3D printers से बनी है। Yeah. So from everything is done here, from designing, we're going to do the PCB design as well. इसकी cost कम आएगी, I think the cost of producing this unit is high. We need to bring it down as we scale number of units to This produce. is pre-made, it's not POC, so obviously. But I'm just saying that there are cases here. These are just two. Rosina is one and this gentleman is the other. But we have 25 other startups who are based here. So what do you need money for? I need, because there are 4 of us, 2 of us are not here. And You need money for wages? no, I need to actually get maybe more for the embedded systems engineering. So Everything else we have here, we have You've got the design, basic everything. So we need, you just need about 6 lakh a year or something like that. little more than that, but I mean, if you combine. What's the salary of Pakistan? Pakistan, it's 15 people, 35 or something, I'm giving about 50. Is that what we want? So to engineering is Let's a say. Yeah, but I don't want, like, I mean, they can humble you. Okay, so I think it's not fair for everyone. No, of course. Your Yeah. personal, well, Yeah. what you want to do is, let's talk about it. You can call them. मैं आपको कनेक्ट करवाता हूँ सर। Done. WhatsApp पे कीजिए आप। Thank you so much, sir. Thank you so much. सर आपका बहुत टाइम लिया मैंने। I think you've done more than what I was expecting. Round of applause for Zensa. Meaning, my calling card is, आज कौन सी तारीख है? आज है 22nd. You have 60 days from today to ask me for something, and I must do it. 60 days from now, getting on. Oh, thank you. सर ये पहला चेक करो। And I just proved it. मैंने आपको कहा कि आप मुझसे 60 days मांगे मुझे अल्लाह मैंने तो I need to discuss your product taste here. Yes. मेरा health tech startup है hospital. We would like to see possibilities how to integrate. खुरम आपसे contact करेंगे. Thank you so much. Pleasure. So maybe we can introduce a new product जिसकी हमें ज़रूरत है. Then we want to explore the possibilities of an insurance product. और फिर उसका ये है Pakistan is our learning ground, earning ground is global. I think everybody should be thinking of when you're doing marketing. Don't think of Pakistan as a market, think outside. Think outside. बहुत बड़ी market खुली है. अभी एग्जांपल ले लो क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस है लेकिन फॉर्चुनेटली अल्लाह ताला ने मुझे एक अच्छा टीचर नौकरी दौर में नहीं देता है पैसे के हमारे एक दूसरी इन्होंने मुझे एक बात कही और मैं रियली शॉकिंग उन्होंने एक काम करके हम यहाँ से लोग लेके जाते हैं यूएस में और वहाँ पे उनको जो है वो इंश्योरेंस के लाइसेंस करवाते हैं हम लेके जाते हैं थोड़ा वेट मतलब इस बात करते हैं राइट आप कहेंगे पाकिस्तानियों को यहाँ से लेके जाएं या खर्चे पे लेके जाएं कराएं उसके बाद जैसे लोग तो महिला जाता है कि सर दिन को जाएंगे लोग ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा यार तो सब हो जाएगा इट्स अ माइंडसेट Positively आप when you change your mindset you change your lives मैं आपका नंबर लेता हूँ मैं मुझे प्लीज कॉल करता हूँ 0300 200 8539 funds and insurance. Okay, then group picture होगी हम बाहर यहाँ पे भी सर चल ऐसे पिक्चर में मजा नहीं आता जब तक थम्स अप एनर्जी फैक्टर नहीं आता Thank you
guys. वी आर डाइवर्सिटी को फोकस करते हैं, लेडीज एंड बॉयज, ये सारे के सारे बॉयज आ जाते हैं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज एक मिसिंग करते हैं यहाँ पे, आज चलिए आप आ जाइए, स्टेप इन फॉर अस। यस, सब लोग इधर आ जाए, कुछ लोग इधर जो आ सकते हैं नीचे बैठ सकते हैं, नीचे वाले बैठ सर आप तो ऊपर आ जाइए, नीचे बच्चे हाँ, इधर बैठते हैं, ऐसे करते हैं। आ जाए। हाँ, सोच रही हो। जो नहीं आना चाहता वो तस्वीर खींच ले, क्योंकि वो सर पर पिक्चर पे आता है। सब आ जाएंगे आप, आ जाओ। एक सेल्फी कर लेना यार, आ जाओ, बैठ जाओ। हम सब ये 3, 2, 1, snap. Snap. Snap, snap, snap. One last favor, please. Everybody send me a friend request on LinkedIn. वाह, आओ जनरल, आओ जनरल। Record me, contact information. और ये बंद किया करो। मैं पीछे होकर बैठ रही हूँ। art